और साहब क्या आपको लगता है जो अराइवल ऑफ टूरिस्ट है वो ज्यादा होगा, क्योंकि जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसकी वजह से जो तेल का इशू बन गया है, डीजल ऑयल, दिन ब दिन इसमें इजाफा ही होता है, उसका इम्पैक्ट पड़ेगा जो अराइवल ऑफ टूरिज्म। दूसरा जो सोनम वांगचुक को रिलीज किया गया है, कितना अच्छा डेवलपमेंट। पहले तो दूसरे सवाल को पहले ले लेते हैं। उसको तो कभी गिरफ्तार करना ही नहीं चाहिए था, उसको गिरफ्तार करना ही गलत था, और वो भी एनएसए के तहत। अब चलिए, रिलीज हुए, अच्छी बात है। लद्दाख में हालात ठीक रहे, वो भी मतलब हम चाहते हैं कि जिस तरह हम इस बात पे जोर दे रहे हैं कि हमारे साथ जो वादे हुए हैं उनको पूरा किया जाए, इसी तरह जो लद्दाख के साथ वादे हुए हैं वो भी पूरे किए जाने चाहिए। जहाँ तक आपने टूरिज्म के हवाले से बात की, उम्मीद तो है, लेकिन टिकटों की कीमत सिर्फ इंटरनेशनल फ्लाइट्स पे नहीं चढ़ रही है, यहाँ पे भी अब वो फ्यूल सरचार्ज जो है इंडिगो ने लगाना शुरू किया है। अब कितना असर उसका हमारे सीजन पे पड़ेगा वो देखना होगा, लेकिन तब भी हम उम्मीद कर रहे हैं कि जो फिलहाल दिख रहा है, शुरुआत ठीक हुई है और तादाद बढ़ेगी, यही हम चाहते हैं। Iran has allowed Indian ships to move toward the Hormuz. LPG gases भी उसमें है, and how do you see this move coming in? Anything that allows us to keep our prices low is a good thing. So whether that means buying oil from Russia or being able to transport our gas and fuel supplies through this strait, which otherwise is closed to everybody else, it's good for us. But at the end of the day, what we want is peace. We want this unjust war that has been imposed on the people of Iran, we want it to stop. As I've said time and again, America and Israel don't get to decide who the leadership of Iran is. Israel and the US do not get to decide who the supreme leader is. That is for the community, that is for the people, that is for the citizens of Iran to decide. The person they assassinated, Ayatollah Khamenei, he was not just a leader of Iran. He was an acknowledged religious leader for the entire Muslim Ummah. So this should not be seen as a conflict with Iran. It has far wider implications. Therefore, no matter what is done for India, fine, we will benefit. But ultimately we will benefit when peace reigns. And we want this unjust war to end. So after attack on Farooq Saab, MHA is reviewing the security of all the VIPs. वो क्या कहते हैं, जब घोड़ा अस्तबल से भाग गया उसके बाद आप अस्तबल का दरवाजा बंद करते हो। अब तो हमला हो ही गया ना, ये नौबत आनी नहीं थी, क्यों आई पहले तो वो बताइए, उसके बाद हम बाकी बात करेंगे। दिस शुड नेवर हैव हैपेंड। तो अब चलिए, हो गया, अल्लाह ताला बचाने वाला। I'm sorry, it is not my habit to comment on what other people have said. You asked to forget her. Other leaders should be released. Look, Shabir Shah has been. Just a minute. Sir, I would we have constantly been making the case that people facing minor charges or those who have spent longer in jail than their sentence would otherwise be should be released. And I think given the sanctity of this month, the holy month of Ramzan, Eid is almost a week away now. It would be in the fitness of things that similar to what was done with Sonam Wangchuk, you do in other places also. Do it here. Those youngsters who were detained last week, those who had FIRs, many of them are first-time offenders. Many of them hardly participated in a protest. I think as a measure of, as an expression of goodwill, revoking the cases against them and releasing some of these people from jail would be a good step. Any development regularization of casual labor of floriculture? Yeah, ये assembly का session बनाया हमने।